Hello everyone, this question appears in Class 6 NCERT chapter of Understanding Elementary Shapes. This is third question of its exercise 5.6. So the question says that name each of the following triangles in two different ways. You may judge the nature of the angle by observations. So firstly हम according to angle देखेंगे. So all angles are acute angles. So हो जाएगा acute angle triangle. नेक्स्ट यहाँ पे एक एंगल हमारा राइट एंगल है, सो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पर वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. अगेन राइट एंगल, सो हो जाएगा राइट एंगल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. सेम ऐसे समझ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. ये हो जाएगा हमारा ऑल एंगल्स आर एक्यूट, सो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एंड दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस, हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. सो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू एंगल. अब हम देखेंगे ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. सो हो जाएगा हमारा टू साइड्स आर सेम, सो हो जाएगा आइसोसेलेस. Here all sides are different, so हो जाएगा स्केलिन. Here two sides are equal, so हो जाएगा isosceles. Here two sides are equal, so हो जाएगा isosceles. Here all sides are equal, so हो जाएगा equilateral. And here all sides are different, so हो जाएगा scale. Thank you.